नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। काविश अपडेट्स के साथ अरशद अवान आपकी खिदमत में हाजिर है। 23 मार्च के हवाले से पाकिस्तान रेजोल्यूशन डे एपी पैक के तहत दुनिया के सबसे बड़े मिनिएचर वर्ल्ड लैंड न्यू जर्सी यूएसए में मनाया गया। अमेरिका में बसने वाले पाकिस्तानी कम्युनिटी की खिदमत में पेश मीडिया पर्सन्स और दीगर शख्सियात को अवार्ड्स भी पेश किए गए। एपी पैक के ज़ेरे एहतमाम नॉर्थलैंड्स न्यू जर्सी में 23 मार्च योम करारदाद पाकिस्तान की शानदार तकरीब मुनक्कद हुई। सहाफ़ियों के लिए यादगार इवेंट, साइटेशंस और इनामात से हौसला अफजाई। इस तकरीब में एपी पैक के चेयरमैन डॉक्टर एजाज, प्रोग्राम ऑर्गेनाइज़र और डायरेक्टर नाहिद भट्टी और एपी पैक के मेंबरान चौधरी असद, डॉक्टर आलम, आसिफ चौधरी और पाकिस्तानी कम्युनिटी के कई एक मुअज़्ज़ज़ीन ने शिरकत की। कौंसल जनरल मोहतरमा आयशा अली ने खुसूसी शिरकत की। प्रोग्राम का आगाज़ एपी पैक न्यू जर्सी की डायरेक्टर राहिला फिरदौस ने तिलावत कलाम पाक से किया। पहले अमेरिका का तराना। और फिर पाकिस्तान का कौमी तराना पेश किया गया। जो इस्लामी जमहूरियत पाकिस्तान के नाम से दुनिया के नक्शे पर नाम उभरा, वो पाकिस्तान का नाम था। इसीलिए 23 मार्च का दिन हमारे लिए बहुत ही अहमियत का हामिल है और आज हम पाकिस्तान रेजोल्यूशन डे के हवाले से होने वाली इस खूबसूरत तकरीब में यहाँ मौजूद हैं लिमिल्टन में, नॉर्थलैंड्स में। और नॉर्थलैंड्स अपनी नौयत का एक बहुत ही खूबसूरत अपनी नौयत की बहुत खूबसूरत जगह है, म्यूज़ियम है। इसमें जिस तरह के आपने देखा है कि बहुत सारी अंदर जो ट्रेन्स हैं उनका एक जो सेटअप है उसको देखकर यकीनन इसे गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी इसका नाम दिया गया और ये बहुत ही खूबसूरत है फारिग सुजल साहब ने। इसीलिए हमारे लिए आज इस जगह पर ख़ास तौर पर इस तकरीब का अहतमाम किया ताकि आप लोगों को भी इस जगह से मुतारिफ़ करा सकें और न सिर्फ मुतारिफ़ करा सकें बल्कि ये एक बहुत बड़े एजाज़ की बात है कि हमारे पाकिस्तानी भाई ने यहाँ पर ये जो नॉर्थलैंड्स है उनके पास है और वो चाहते हैं कि अपनी कम्युनिटी की तरफ से भी हम ऐसी तकरीबात का अहतमाम यहाँ करते रहें। तो बहुत ज़्यादा सादिक साहब के लिए मैं ये कहूँगी कि माशाल्लाह आपकी कोशिशें इसी तरह नहीं, पाकिस्तानी कम्युनिटी आपके साथ और आप हमारी पाकिस्तानी कम्युनिटी के साथ ही रहेंगे। सबसे पहली जो हमारे आज के इस प्रोग्राम के स्पीकर हैं, इस प्रोग्राम के ऑर्गेनाइज़र नाहिद भट्टी से मैं गुजारिश करूँगी कि तशरीफ़ लाएँ और इस प्रोग्राम के अंदाज़ हासिल बनाएँ। ख़वातीन हज़रात, अस्सलाम वालेकुम। आज हम यौम पाकिस्तान मना रहे हैं। 23 मार्च 1940 में करारदाद पाकिस्तान मंजूर हुई थी जो पाकिस्तान की तख्लीक का बास हुआ। पाकिस्तान जो इल्लामा इकबाल का ख्वाब था, पाकिस्तान जो कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का अज़्म और पाकिस्तान जो कि मुसलमान हिंद का जोश जज्बा था, इन सब की बेइंतहा जानी और माली कुर्बानियों से पाकिस्तान हासिल किया। कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने उर्दू ज़बान को कौमी ज़बान करार दिया और इस ज़बान को कौमी यकजहती के लिए ज़रूरी समझा। हमारे सहाफ़ी
पाकिस्तान की कौमी ज़बान उर्दू को इस दियार गैर में ज़िंदा रखे हुए हैं और उर्दू ज़बान का परचम बुलंद किए हुए हैं और इस ज़बान को फ़रोग़ भी दे रहे हैं, जो कि हमारी सकाफ़त की एक निशानी है। हमारे सहाफ़ी यहाँ पर पाकिस्तानी बरादरी को पाकिस्तान के हालात से और इस मुल्क में पाकिस्तानियों के हालात से बाखबर रखते हैं। यहाँ जितनी भी तकरीबात होती है इसकी कवरेज करते हैं। ये सब अपने फ़राइज़ अंजाम देने के लिए वो दिन रात बहुत मेहनत करते हैं। इन सहाफ़ियों की बेलौस खिदमत को, इनकी मेहनत को जानने और पहचानने के लिए आज के दिन इनको साइटेशन दी जा रही है। और मैं सुहेल मोहम्मद की मशहूर हूँ कि इन्होंने न्यूयॉर्क स्टेट सेनेटर एना कैथरीन अपने ऑफिस से साइटेशन मंजूर करवाई है। मैं APPAC की तरफ से और तमाम पाकिस्तानियों की तरफ से अपने इन सहाफ़ियों को मुबारकबाद देती हूँ जिसके ये सब मुस्तहिक हैं। मैं हमारी कौंसल जनरल मोहतरमा आयशा अली की बहुत मशहूर हूँ कि उन्होंने इस प्रोग्राम में शिरकत की और हमारी महफिल को रौनक बख्शी। हमेशा की तरह APPAC के चेयरमैन डॉक्टर इजाज़ अहमद का शुक्रिया कि उन्होंने ये प्रोग्राम APPAC के प्लेटफॉर्म से करने की इजाज़त दी। इस प्रोग्राम को मुनक्किद करने के लिए नॉर्थलैंड के मालिक तारिक सुहेल की मशहूर हूँ कि उन्होंने ये प्रोग्राम मुनक्किद करने के लिए इस खूबसूरत म्यूज़ियम में जगह दी। मैं तमाम सहाफ़ियों की शुक्रगुज़ार हूँ कि उन्होंने इस प्रोग्राम में शिरकत की। फरजाना राहिला फिरदास का भी बहुत शुक्रिया। हमारी ऑर्गेनाइजिंग कमेटी के डॉक्टर मोहम्मद आलम, आज़म खान, आसिफ चौधरी, सैयद अदनान बुखारी, असद अली और खावत बेटे का उनका भी बहुत शुक्रिया। एक दफ़ा मैं फिर आप सबका खुसूसी शुक्रिया अदा करती हूँ और दुआ करती हूँ कि हमारी कम्युनिटी दिन ब दिन तरक्की करे और मजबूत हो। हमारी नौजवान नस्ल को हमारी सकाफ़त और ज़बान से आगाही हो और अल्लाह ताला पाकिस्तान को, उर्दू ज़बान को हमेशा ज़िंदा व पाइंदा रखे। पाकिस्तान जिंदाबाद। और खुसूसी तौर पे today I am also thankful to the Northland staff for the beautiful setup for the event. Thank you all. किसी भी प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज करना और लोगों को जमा करना एक बहुत ही मुश्किल काम होता है और नाहिद का क्योंकि बहुत सारे लोगों के साथ एक तरीक़ी ताल्लुक़ भी है और माशाल्लाह इनका बुलाने का जो अंदाज़ है उसे कोई नज़रअंदाज नहीं कर सकता, राइट? अच्छा जी, तो नाहिद के लिए बहुत सी तालियां होनी चाहिए। अब मैं जिन मुकर्रर को स्टेज पर आने की दावत दे रही हूँ, आप यकीन कीजिए इंसानियत की खिदमत अपनी जगह, लेकिन हर वक्त दिलों से खेलते हैं और दिलों के साथ ही काम में लगे रहते हैं। उनकी शख्सियत बड़ी बागोबहार है क्योंकि एक तरफ तो ये डॉक्टर हैं, दूसरी तरफ ये बहुत अच्छे सिंगर भी हैं और नाखान भी हैं और इनकी समाजी खिदमत का हवाला तो किसी तरह मैं आपको पेश कर ही नहीं सकती। लेकिन वक्तन फ़वक्तन हमारी कम्युनिटी के लिए APPAC के प्लेटफॉर्म से जो प्रोग्राम्स इनकी सरपरस्ती में होते हैं वो यकीनन बेहतरीन होते हैं। आपके और हमारे सबके जाने पहचाने मैं डॉक्टर एजाज साहब से गुजारिश करूँगी स्टेज पर तशरीफ लाइए और आज के प्रोग्राम में हमारे मुअज़्ज़िज़ मेहमानान से अपने ख्यालात का इजहार करें। Thank you all so much for being here and organizing this event today. I would like to take this opportunity to thank our host Tariq Suhail and his full team of organizers for today. Thank you very much. And then thanks to Nahid Bhatti for organizing this amazing family event and program with food, music, and museum visit for our young people. Thank you, Nahid. Thanks to Ms. Aisha Ali for joining us. We are honored to commemorate Pakistan Revolution Day with you today. And thanks to all of our media partners for being here.
As a community, we are lucky to have an ethnic media sector that covers every APPAC and Pakistani community event and broadcasts it globally, further connecting us to our roots in Pakistan. Thank you all for being here. Today, we are reminded and inspired by those who stood up for independence on Pakistan Resolution Day. We are reminded that those who took a stand alongside Quaid-e-Azam Muhammad Ali Jinnah and founding fathers were in fact many people. It is important that we continue unforgettable events like this to educate our young people and families on our history and share this with other local communities around us. I urge all of us to share and celebrate a day like today with our neighbors and engage them to give them an opportunity to learn about Pakistan's history and culture. And thank you one more time, all of you, for celebrating with us today. Thank you. हमारे कॉन्सुलेट में ये खुशकिस्मती की बात है कि हमारी याददाश्त के मुताबिक गालिबन 30 साल के बाद हमारी ख़वातीन के लिए ख़ास तौर पे बड़े एजाज़ की बात है कि मिस आयशा अली हमारी कौंसिल जनरल बनकर आई। ये हमारी कम्युनिटी में इतना खूबसूरत इजाफा है कि जहाँ जहाँ जाती हैं सबको अपना दीवाना बना के चलती हैं। हमारी आज की इस कम्युनिटी में एक बार फिर जलवा अफरोज़ है आयशा अली साहिबा जो कि हमारी कौंसिल जनरल है। मैं गुजारिश करूँगी कि प्लीज़ स्टेज पर तशरीफ़ लाइए और हमारे जितने भी यहाँ पे मेहमानान हैं आपकी बातें सुनने के लिए इंतज़ार कर रहे हैं। प्लीज़ तशरीफ़ लाइए। सबसे पहले शुरू करना चाहती हूँ आप लोगों को बहुत बहुत मुबारकबाद देने से। On 23rd of March, we will be celebrating the 75th National Day of Pakistan. So, right for everyone, congratulations, mubarakbad. Thank you so much to Tariq Suhail Sahab, मुझे नजर नहीं आ रहे, but it is a very तारिक भाई सामने खड़े, सॉरी जो सामने खड़ा हो बिल्कुल नजर नहीं आता। सो थैंक यू सो मच, व्हाट अ यूनिक सेटिंग। मैं एक तो आपको बहुत मुबारक देना चाहती हूँ फॉर एक्वायरिंग दिस वेरी ब्यूटिफुल प्लेस, वर्ल्ड्स लार्जेस्ट मिनिएचर वंडरलैंड, and for someone from our own community, from the Pakistani American community, to do this, to acquire this beautiful historic place, which will be something that families can aspire to come to and spend their free time in. It's something that I'm extremely proud of. Congratulations to you, आंटी, मुबारकबाद आपको भी देना चाहती हूँ। तारिक साहब ने एक बहुत बड़ा कारनामा सरअंजाम दिया है जिसके लिए हम सब बहुत खुश हैं। Thank you so much, Dr. Ijaz Sahab. Your contributions, your efforts for the community are immense. अगर मैं उनकी बात करने लगूँगी तो 2-3 घंटे उसमें गुजर जाएंगे। As president of APPAC, as a cardiologist, as a prominent Pakistani American who gives back to the community and to the country, your services are unmatched. We're very grateful to you, to your organization as well, the work that you're doing with the congressmen and with the legislators, with the elected officials. I think it's unprecedented in our community, and he is someone who's shown a path to so many other Pakistani Americans of how they can make their contributions in a new way, in a substantive way, in a way that goes far beyond traditional ways of interacting with the elected officials. So we're grateful to you. I also see Dr. Alam Sahab, and he's always there behind the scenes, running the whole show. Thank you. Asad Chaudhary is here, all from APPAC. Adnan Bukhari, I cannot miss you. Thank you so much. This is a day to honor and to remember and to have a vision for the future. अगर मैं आपको अपने last 3 days का एक छोटा सा glimpse दे सकूं तो आपको पता चलेगा कि हमारी पाकिस्तानी अमेरिकन कम्युनिटी कितनी
contributions कर रही है और कितनी different तरीकों से ये contributions हो रही हैं. On Friday evening, I was with Soni Watan Gilgit-Baltistan organization promoting tourism and investment opportunities. Today morning, I was with a group of individuals led by our former captain of cricket, Captain Misbah Haq, जो कि children's congenital heart diseases के लिए एक उन्होंने फाउंडेशन यहाँ पर पाकिस्तान में क्रिएट की है और सिलसिले में वो यहाँ पर आए हैं. आज अभी मैं आपके दरमियान यहाँ पर मौजूद हूँ. कल I went to IMI, which is the Imamia International Medics Organization. I am just blown away. This is just the last 3 days. I cannot tell you in the limited time that I have of the contributions that Pakistani Americans are making. And absolutely, you know, I am just so overwhelmed by it. You are all amazing. You are actually the ambassadors of Pakistan. You are the ones who are flying the flag of our country so high in so many different ways. Wherever I go, I meet talented Pakistanis doing new and innovative things. A large number of Pakistani Americans here are physicians, are professionals. There are all sorts of people in this mix. There are blue-collar workers and white-collar workers, and there are young Pakistani Americans, the second, third generation, who are just amazing in so many different ways. So I cannot thank you enough for all that you do for Pakistan, all that you do for Pakistani Americans here, and for your own communities. You're earning a name for your country, for yourselves, and for your community. In the last 2 years, we've seen so many of our women come up and do amazing things. We now have 3 state assembly women, 2 from the state of New Jersey and 1 from Connecticut. This is unprecedented and amazing and something that we need to celebrate. And we have so many officials in New York City government that are of Pakistani heritage. We have recently seen that a senior advisor, Ihsan Chugtai, has been appointed by the Mayor Adams, as a senior advisor on Muslim and South Asian communities. So mashallah, great momentum by the community and great leaps forward. We are behind you as the government of Pakistan. We support every effort that you make in this country. And on this 75th National Day of Pakistan, inshallah, on 23rd of March, we will be having OIC CFM in Pakistan, which is the Foreign Ministers Conference of the Islamic Organization, which is a great moment for Pakistan and a real recognition of the efforts that Pakistan have made for the Muslim communities and for the Muslim countries in the world. Alhamdulillah, Pakistan has done extremely well during the pandemic, and our strategy during the pandemic, our successful smart lockdowns, was something that have been internationally recognized, as a result of which we were able to save millions and millions of our citizens from the worst form of this disease. The economies of the world are opening up, global economies are opening up. The economy of Pakistan, alhamdulillah, is on the right track and on the right path. We'll be very happy to hear that Pakistan's exports to the United States have increased many-fold despite the pandemic. There has been over 30% increase in our exports to this great country. This is also the largest destination of our exports anywhere in the world, which is again a great thing. And there's a lot of contribution from our Pakistani American investors and businesses and our businesses back home. We have been also, during this very dark time of the pandemic, recognized worldwide for our social protection and social safety programs that we enforced in Pakistan to take care of the least economically well-off people or the economically disadvantaged. Through ASAS programs, the government has been able to take care of the poorest of the poor and instituted programs that have made their lives much easier
during the pandemic, or it would have been much worse. As far as environment is concerned, we're also on track to plant over 10 billion trees. And the 10 billion tree tsunami is already on its way. So there's several things that we can be proud of. We're a country that we must never ever forget that started from a scratch. We started with nothing. In 1947, when hundreds and thousands and millions of refugees came to Pakistan, Muslim refugees, they had nothing to their name. And they came to a country where there was no infrastructure, where there was no government structure, where there was nothing. We were starting from a scratch. For this nation to come this far, we are extremely, extremely proud of the hard work of our brothers and sisters and the hard work of the Pakistani people. It's a day to salute the resilience of the people of Pakistan. And whenever I listen to the anthem, to our national anthem, whenever I see our flag rise, I cannot watch that without tears in my eyes, because I know the country that we live in, the country that we represent, the country that we call our homeland, is a country that came into existence on the back of the sacrifices of millions and millions of people. So extremely grateful to Allah on the 75th National Day of Pakistan that we have a homeland that we can call our own, that is our identity in this world. And as the Consul General of Pakistan in New York, representing the largest section of Pakistani American community, it is indeed a unique honor for me. Thank you so much for everything that you do for Pakistan, for promoting the soft image, the positive image of Pakistan. On behalf of the government, we are very, very grateful to you. And we look forward to a day, inshallah ta'ala, when ours will be a country ranked among the top most developed, prosperous and happiest countries of the world. Thank you so much for your patience and Pakistan. हमारे आज के इस प्रोग्राम में हम बार बार तारिक सुहेल साहब का नाम ले रहे हैं। नो डाउट तारिक सुहेल साहब जो है इन्होंने हमें यहाँ बुलाने में एक भरपूर किरदार तो अदा किया है, लेकिन जहाँ पर कोई प्रोग्राम फैमिली के साथ मिलकर होता है उसकी बात ही कुछ और होती है। और मुझे बड़ी खुशी है कि इनका ये जितना भी काम है इसमें इनकी फैमिली इनके साथ साथ नजर आती है। तो इस वक्त मैं दावत दे रही हूँ जनाब नफीस अंजुम साहब को, जो कि तारिक सुहेल के बड़े भाई हैं, और कि वो स्टेज पे तशरीफ लाइए प्लीज़, और कुछ आप भी कहिए क्योंकि आपसे भी लोगों की मुलाकात करवाना बहुत ज़रूरी है। First of all, I would like to say thank you very much for everybody. I would like to say thank you, and especially for I think this is the first event where we're especially organizing Pakistani community on the Pakistan Day. And it's really honor for us to organize this event, and especially those APPAC, I think APPAC, yes, APPAC, all their team. Thank you very much for organizing and bringing a community from I think from different states to here at Northlands, and thank you. वंडरलैंड में आके देखा तो इतना खूबसूरत माहौल, इसकी ट्रेन और इनसाइड जो इनका म्यूजियम है इतना खूबसूरत है। अगर आप इसमें जाएंगे, पूरा इसका टूर लेंगे तो आपको अंदाज़ा होगा कि ये एक बहुत ही खूबसूरत म्यूजियम है। इसीलिए इसको जो है वो गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी रखा गया है। और इन्होंने जिस तरह कम्युनिटी में आके हमारे प्रोग्राम्स में भी हमें बहुत सपोर्ट किया है, तो आज हम सब आपके साथ मौजूद हैं। देखिए आप हमें यहाँ अपने प्रोग्राम में ऐसे गेस्ट, हम लोगों को गेस्ट हैं, आप मेज़बान हैं, तो आप आइए और आके कुछ कहिए ताकि हमारे जो आए हुए मेहमान हैं वो जान सकें कि ये सब जो इतना खूबसूरत माहौल है इसके पीछे क्या राज है और क्या इसकी हिस्ट्री है। तो तारिक सुहेल साहब प्लीज़ तशरीफ लाइए। अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान पाकिस्तान गुड, पाकिस्तान जिंदाबाद। अच्छा, मेरा नाम काफ़ी दफ़ा सुन चुके हैं आप लोग, तारिक सुहेल, लेकिन मैं थोड़ा इंट्रोड्यूस करना चाहता हूँ कि जो नॉर्थलैंड्स है
is owned by WBM, जो कि इसकी पेरेंट कंपनी है. WBM इंटरनेशनल अगर गूगल भी करेंगे ना, तो जैसे आयशा अली बोल रही थी कि ये प्लांटेशन पे काम हो रहा है. हमारी WBM फाउंडेशन है पाकिस्तान में, जो कि लास्ट 12-13 साल से काम कर रही है प्लांटेशन से. बिफोर इवन इमरान खान साहब ने इनिशिएटिव लिया था, तो हमारा बहुत ज़्यादा काम हो रहा है इसके ऊपर. पाकिस्तान के अंदर काम करते हैं. और जो WBM बेसिकली हम पाकिस्तान से मैन्युफैक्चर करके हमारी पिग साल को US मार्केट में ऑल ओवर द वर्ल्ड इसको लेके आ रहे हैं, डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं. पिग साल से भी शुरू किया था, तो अल्लाह का शुक्र है बहुत ज़्यादा और चीज़ें हैं, राइस स्पाइसेस हैं, मैक्सिमम पाकिस्तान चीज़ें हम लेके आ सकते हैं, इसको एक्सपोर्ट कर सकते हैं. तो WBM के पोर्टफोलियो में एक ब्रांड है, हमारी 25 डिफरेंट ब्रांड्स हैं जिसको हम ऑल ओवर द वर्ल्ड मार्केट करते हैं. जब हमें क्योंकि अल्लाह का शुक्र है कि हमारी पिग साल में हमारी ब्रांड वर्ल्ड वाइड है, तो हम उससे पूछते हैं कि नॉर्थ फ्रेंड्स आपको कैसे मिला. तो 2018 में अल्लाह ताला ने हमको दे दिया क्योंकि हमारी अपनी ब्रांड WBM हमारे लिहाज से टॉप ऑफ द वर्ल्ड है, और ये भी गिनीज वर्ल्ड ब्रैकेट में ये लोकेटेड है. और इसके जब हमने बाय किया था, तो जो बंदा इसको लेके आया था हमें, तो कहते थे कि ये प्लेस अवेलेबल है, अगर आप इसके अंदर भी सामने अपने वेयरहाउस के लिए यूज़ कर लें, यू कैन यूज़ द डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर. तो हम इसलिए इसको देखने आए पहली दफ़ा. लेकिन जब हमने अंदर आके देखा इसको, तो देखा इस वेरी वेरी यूनिक प्लेस, इज़ वन ऑफ इस काइंड. इसके अंदर ऐसी ऐसी चीज़ें पड़ी हुई है जो प्राइसलेस हैं, बिलियंस ऑफ डॉलर्स हैं, क्योंकि ये सब आर्ट है ना. आर्ट की वैल्यू तो कि उसके जानने वाले के मुताबिक होती है. सो जिस बंदे ने क्रिएट किया है, और उसके बाद कोई और क्रिएट नहीं कर सकता इसको. तो हमने कहा ठीक है, हम इसको टेक ओवर करेंगे, इसको प्रिजर्व करेंगे, इसको मार्केट करेंगे. ठीक है. अब हमारा मकसद ये कम्युनिटी को ये बताने का है कि एक तो अगर हमारी कम्युनिटी आती है, उनके बच्चे आते हैं, कि दे गेट इंस्पायर्ड फ्रॉम इट, कि एक बंदे ने इतना बड़ा काम कर दिया है, ठीक है, तो गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में चला गया है, तो हम क्यों नहीं कर सकते. राइट. तो एक इंस्पिरेशन पॉइंट है. और दूसरा हमारा है कि जो भी लोग डिसेबल हैं, मेंटली हो या फिजिकली हो, फ्री ऑफ चार्ज है, उनसे कोई चार्ज नहीं करते हैं. नेवर कभी वेबसाइट पर जाए करें, वॉक इन करें, इट्स ऑल फ्री ऑफ चार्ज. ये भी हमारा मैसेज है, ताकि आपको जो लोग अफोर्ड कर सकते हैं वो आएँ, इसको सपोर्ट करें बिजनेस को. लेकिन हमारा गोल इससे बड़ा है कि लोगों की हम हेल्प कर सकते हैं, एनीवे हम इसको कर सकते हैं. आप इसके अलावा हमारा पहला इवेंट है, सारी कम्युनिटी को वेलकम करना चाहते हैं. थैंक यू सो मच फॉर कमिंग. पहली दफ़ा उनके साथ इवेंट कर रहे हैं, दिन रात में भी काम किया मेरे साथ इसको ऑर्गेनाइज करने के लिए. बहुत वेलकम आयशा अली सर. साहिबा, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग. इट्स ऑनर टू हैव यू हियर, और लुकिंग फॉरवर्ड टू डूइंग अ लॉट वर्क विद यू. और इसके बाद काफ़ी लोग आए हैं, वो समझते हैं कि यही छोटा सा है, जब पहला से लोगों ने देखा है. दिस इज़ नॉट इट. अभी आपने खत्म होने के बाद हम आपके ये लेटर ओपन रखेंगे. नॉर्मली 6 बजे बंद होता है, लेकिन वी कैन बी ओपन टिल 8 o'clock, क्योंकि आप जब इसके टूर शुरू कर लेते हैं ना, इट कैन टेक यू ऑलमोस्ट 2 hours टू गो थ्रू. खत्म नहीं होता, इतना बड़ा ये. इट्स वेरी लॉन्ग वॉक. तो हम चाहते हैं कि आप रश थ्रू ना करें, टेक योर टाइम, एंजॉय इट, लर्न अबाउट इट, एंड देन दिस वे यू कैन सी हाउ बिग दिस प्लेस इज. तो आप ये खाना स्टिल अवेलेबल होगा, आप टूर को एंजॉय करेंगे. एंड थैंक यू सो मच फॉर कमिंग एवरीबॉडी, एंड वेलकम टू नॉर्थलैंड्स. कॉन्टेक्स्ट में मैं 2 नाम जो बहुत अहम नाम थे वो मेरे जहन से निकल गए. मैं उनको रिकग्नाइज करना चाहूँगी. Nahi, thank you so much for organizing this. I know how difficult it is to organize an event, because in our work and diplomacy we do this all the time. I know how difficult it is to bring people together, to put something this wonderful together. Bahut shukriya, and especially because you represent the women's wing, and it is really the year of the women. So thank you so much. And Suhail Rana Sahab, I don't know if he is also Mohammad Suhail Rana, and he does amazing work for the community with Senator Anna Kaplan. I want to thank you. We've had several conversations. Thank you so much for your work. Good evening and Assalamu alaikum. It is a very delightful day that we gathered to commemorate the March 23rd resolution which was passed in 1940, as our Consul General Aisha alluded to in detail, and that movement led to the creation of Pakistan in 1947, and it is the 75th anniversary of that independent country, and we are all here as the diaspora
and expatriate Pakistanis to celebrate and show our allegiance to that country which was created for the Muslims of the subcontinent when British left that area. Thank you very much for coming to this event, and I thank you very much the organizers, especially Sister Naeed, to put everything together along with many other friends who are active in the community. Thank you. अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो मैं जो होस्ट हैं हमारे यहाँ के उनको मुबारकबाद देता हूँ कि बहुत बहुत शुक्रिया, आपने इतना अच्छा इवेंट जो है ऑर्गेनाइज करने की ज़रूरत थी माशाल्लाह से। द होल establishment is a reflection of your dedication and your hard work, so congratulations. Secondly, thanks to all our respectful guests, honorees and delegates. Thank you for being here. 23rd March is such an amazing day, not for just for us celebrating here. Look around what is going around in the world. People are fighting for their freedom, for democracy, and for their rights. Isn't it that we are so blessed to call ourselves Pakistani American? We are proud Pakistani American. We came to this country with our identity, with our, Alhamdulillah, we born free, we're living free. Inshallah, when we die, we will be die as a free nation, right? So what I'm trying to say is that we should be very thankful to Allah Ta'ala that Allah Ta'ala has given us such a wonderful leaders like Qaeda Muhammad Ali Jinnah and Allama Iqbal, who have left a wonderful country for us. This is our responsibility to help back home, as well as we should empower ourselves here. What APPAC is doing, you all should please support us. It takes a lot of efforts. Dr. Ijaz have taken initiative. Every day and night, we spend hours. And trust me, this time is very valuable. We take this time out from our family and we dedicate this time for our coming generation. The activism, the political activism is not easy. It's not for granted. Agar ye time humne zaya kar diya, we are already way behind from the other communities. Trust me, we are way behind. So APPAC is your organization. Please support it. We do legislative engagement. We empower our community leaders to run for offices. Right now, let me tell you one thing, and I'm very emotional, and I'm kind of sorry if you feel that I'm disrespectful. I want to emphasize on this that right now, at this moment, in upcoming election, there are 4 to 5 Pakistanis running for mainstream seats from assembly to state and Congress. Kevin Shakil, Rima Rasool, Hussain, there's another guy, Amir. They all are running for offices. We should support them, and APPAC is working very closely with these Pakistani candidates, and inshallah if they win, this will be a big success. So please support APPAC. Thank you very much. With that, I will request Raila, please carry on from. अच्छा जी, क्योंकि हमारे पास बहुत सारे नाम हैं तो मैं चाह रही थी कि मुझे उनकी लिस्ट मिल जाती, लेकिन बहरहाल हमारे पास सबसे पहला जो साइटेशन के लिए नाम है हमारी कौंसल जनरल मोहतरमा आयशा अली साहबा के लिए, जो ख़ासतौर पर हमारे आज प्रोग्राम में मौजूद हैं। मैं डॉक्टर इजाज़ से गुजारिश करूँगी कि वो उन्हें ये साइटेशन पेश करें। और फ्लावर्स के लिए नाहिद भट्टी।
लॉर्ड की तरफ से एक तोहफा पेश किया जा रहा है। So this is a beautiful citation from Senator Anna Kaplan. It's recognizing for March 23rd, 2022 as Pakistan Day in the state of New York. Whereas it is fit and proper in keeping with its time-honored traditions to recognize and pay tribute to those who foster ethnic pride and enhance the profile of cultural diversity which strengthens the fabric of the communities of New York State. I, Senator Anna Kaplan, am justly proud to proclaim March 23rd, 2022 as Pakistan Day in the state of New York. Pakistan Day is a national holiday in Pakistan commemorating the Lahore Resolution passed on March 23rd, 1940 and the adoption of the first constitution of Pakistan during the transition of the Dominion of Pakistan to the Islamic Republic of Pakistan on March 23rd, 1956, making it the world's first Islamic republic. So this is a beautiful citation, again, very well deserved for our very own. With that, without wasting any more, any extra minute, I would like to request our respectful journalist, Mr. Fazlullah from Voice of America. Please come to the stage. Citation from Senator Anna Kaplan honoring Fazlullah in recognition of your work with Voice of America and your contribution and dedication to the Pakistani community. March 20, 2022, signed by Senator Anna Kaplan. Thank you. Our next guest is Mr. Manzoor Hussain from Dunya News. Mr. Manzoor Hussain. Have a big hand for Mr. Manzoor Hussain. He does a wonderful job. He's very dedicated journalist, and his work reflects his personality. He's very meticulous. Thank you. Citation from Senator Anna Kaplan honoring Manzoor Hussain in recognition of your work with Dunya International and your contribution and dedication to the Pakistani community. March 2022, signed by Senator Anna Kaplan. Thank you. Our next honoree is Mr. Arshad Awan, Kavish TV, New York. Mr. Arshad Awan. Citation from Senator Anna Kaplan honoring Arshad Awan in recognition of your work with Kavish, New York, and your contribution dedication to the Pakistani community. Thank you. Our next guest is journalist Mr. James Akron from Dunya News. Mr. James. Have a big hand for Mr. James Akron. Citation from Senator Anna Kaplan honoring James Akron in recognition of your work with Global TV USA, your contribution and dedication to the Dunya News. Thank you. Our next journalist is Atif Khan from Dunya News. Atif Khan. Senator Anna Kaplan honoring Atif Khan in recognition of your hard work with Dunya News and your contribution and dedication to the Pakistani community. Thank you. I think Pakistan community is very proud to have Atif. Okay, our next honoree is Arshad Chaudhry Saab. Arshad Chaudhry Saab.
citation from Senator Anna Kaplan honoring Arshad Chaudhary in recognition of your work with A1 video channel and your contribution and dedication to the Pakistani community. Thank you. Our next honoree is Mr. Riaz Babar from TV1. Mr. Riaz Babar. Have a big hand for Mr. Riaz Babar. Citation from Senator Anna Kaplan honoring Riaz Babar in recognition of your work with TV1 USA and your contribution and dedication to the Pakistani community. Thank you. आपके पास अमानत जी जी मैंने अपनी अमानत All right, so, well, you know this March month is very important. It is also a Women's Recognition Day. Women's month, right? Sorry. With that, and definitely, let me tell you one thing. In my political activism, I have learned one thing, that women are very organized, they are good leaders, and they are great moms. Many of them are here, including my mom is here, and she always complained that I don't bring her to the good events. So today you are here at the best event. And my wife is here also. So thank you all. Thank you very much. Have a big hand for yourself. This citation is for Ms. Rahila Firdaus. She's a great anchor and doing a lot for our community. Thank you very much. Thank you, ladies and gentlemen. I was trying to hold myself for so long, and now I got this opportunity. So I just have one small, sweet and short message for all of you. You have heard what Pakistani American has been contributing to become a vibrant part of the society in America. Because America is our new homeland by choice. And we are not going nowhere. We are staying here. And whenever I go somewhere, some people, they say, oh, you know what, why we become a part of APPAC or a member of APPAC? So I always shocked, I said, why not? And they said, because you never asked us. So now today, I'm asking everybody to please become a member of APPAC. And I guarantee you, you can mark my words and you can read my lips. Today, if you become a part of APPAC, a member of APPAC, and if you support APPAC, APPAC is going to take you all the way up, inshallah. So now, I would like this citation to Farzana Habib. Farzana Habib, please. Oh, she's a great artist, and we were so impressed by listening to her, Pakistani drama, and she's the well-known great singers as well. So please come to the stage.
Now I would like to invite Sahab Munir. Please come on the stage and seek your सबसे पहले तो आप सबका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप इतनी दूर दूर से तशरीफ लाए हमारे इवेंट में शिरकत करने के लिए। 23 मार्च एक हिस्टोरिक डे है पाकिस्तान की हिस्ट्री में, पाकिस्तान रेजोल्यूशन डे, उसके बाद पाकिस्तान बना। और हमें जो लोग भी हम यहाँ पर हैं, जो हमने तरक्की की है, हमारे आबा अजदाद ने इंडिया से हिजरत की और पाकिस्तान में आए, और उसके बाद हम लोग पाकिस्तान से हिजरत करके इंडिया अमेरिका में आ गए। शुरू में जो स्ट्रगल हमने की, लेकिन अब एक टाइम आ गया, हमें महसूस हो रहा था कि हमें अपने बच्चों को, अपने फ्यूचर जनरेशन को इस मुल्क के सिस्टम में इंट्रोड्यूस करना चाहिए। इसके लिए हमने APPAC जो है ना कायम की, इससे फ्यूचरिस्टिक व्यू, ताकि हमारे आने वाली जनरेशन को स्टिमुलेट किया जाए इस सोसाइटी में, वो यहाँ के सिस्टम में रह के लर्न करें, और इसके लिए पब्लिक सर्विस जॉब, पॉलिटिकल जॉब, हर एक चीज़ के लिए। लेकिन हमारी जो सबसे बड़ी कोशिश होती है हमारा बेटा बच्चा डॉक्टर बने, लेकिन हमें डॉक्टर के अलावा भी ज़रूरत है कि पब्लिक सर्विस में जाएं, गवर्नमेंट जॉब करें, ताकि आज के 10-15 साल के बाद हमारे बच्चे आगे आ सकें। तो इस सिलसिले में APPAC की सबसे बड़ी कामयाबी ये है कि हमने एक फेडरल जज नॉमिनेट कराया, फर्स्ट मुस्लिम जज, फर्स्ट पाकिस्तानी जज, फेडरल जज इन द हिस्ट्री ऑफ अमेरिका। सबसे बड़ी कामयाबी ये है। और उसके अलावा हमने एक एटमॉस्फेयर क्रिएट किया है अल्लाह ताला की करम से। तो 20 से 30 कैंडिडेट्स जो है ना अमेरिका में रन कर रहे हैं डिफरेंट ऑफिस के लिए। उसमें से 4-5 हमारे कामयाब हो चुके हैं, 2 हमारे कनेटिकट में कनेटिकट असम्बली के मेंबर हैं, 2 हमारे यहाँ न्यू जर्सी में हैं। इसके अलावा आहिस्ता आहिस्ता सिटी काउंसिल में और बाकी जगह पर कम अज़ कम तकरीबन 100 आदमी जो है ना हमारे इलेक्टेड मेंबर्स इस वक्त डिफरेंट स्टेट्स में हैं। तो हमारे ये ड्रीम है, इस हमारी ड्रीम इज कमिंग ट्रू, वी वांट यू टू पार्ट ऑफ आवर ड्रीम। तो अब सबसे पहला मेरा जो ऑनर है मुझे कि मैं अवार्ड पेश करूं मावस दीकी को। मावस दीकी साहब ग्रेट जर्नलिस्ट, he did his master's degree in communication and journalism from Karachi University, and he started his career from the young, and after that he joined Jisarat, and he has been a bureau chief of Dunia News for the last 7 years, and he is the only one who, and he is there everywhere, whenever you need, he is there and projecting Pakistan, peace be Allah. Now the last one but not the least, the organizer of this event. I mean, it's such a great event and brought like all this community together, and you guys can guess it. Who is that? Who wants to guess it? Mr. Naheed Bhatti. So I'm here like on behalf of Senator and Kaplan, giving a proclamation recognizing March 23rd, 22 as Pakistan Day in the state of New York, and presenting this proclamation to Naheed Bhatti. Dr. John. और अब नाहिद के लिए फ्लावर्स।
रिकग्नाइज करने का जो सिलसिला है वो बहुत अच्छा भी है। और हमारे पास इस वक्त हमारी कम्युनिटी के डॉक्टर एजाज साहब की अहलिया मौजूद है। हर कामयाब मर्द के पीछे एक कामयाब औरत का हाथ भी होता है, और वो हाथ जो है यकीनन यही मौजूद है। सभा के लिए जो है वो साइटेशन है, तो मैं चाहूँगी कि आयशा ने पेश करें और पूर्व पेश करें। सभा एजाज को फूलों का तोहफा पेश करें। नाज़रीन, मैं हूँ सहर मनी काविश न्यूयॉर्क टीवी से, और आज हमारे साथ है नहीद भट्टी जो आज मेन ऑर्गेनाइज़र है APPAC की। आज इनसे पूछते हैं कि ये क्या कहना चाहेंगे इस इवेंट के बारे में और इनको कैसा लगा है। अस्सलाम वालेकुम सर, आज हमने APPAC 23 मार्च यौम पाकिस्तान मनाया है, जिसमें बड़ी तादाद में यहाँ पे लोगों ने जमा हुए हैं, और इसका मकसद पाकिस्तान और हमारी कौंसलर जनरल भी आई हैं। और आज का खुसूसी प्रोग्राम हमने अपने सहाफ़ियों के लिए जो यहाँ पे दिन रात मेहनत करते हैं, हर प्रोग्राम को कवरेज करते हैं, हमारी ज़बान से लोगों को आगाह करते हैं और तमाम पेपर छापते हैं और मीडिया से हैं। तो ये प्रोग्राम हमने उनको साइटेशन देने के लिए किया हुआ था, और एना कैप्लन जो स्टेट सेनेटर हैं उनकी ऑफिस से ख़ास तौर पे हमने साइटेशन मंगा के उनकी हौसला अफजाई की थी। तो इंशाल्लाह हम लोग ऐसे प्रोग्राम ऑर्गेनाइज़ करते हैं जिसमें कम्युनिटी अपने बच्चों को लेके आएँ और अपने मुल्क की सकाफ़त देखें, और हमारी आने वाली नस्लों को पता चले जो बच्चे यहाँ पल बढ़ रहे हैं कि हमें यहाँ रह के भी अपने मुल्क का नाम रोशन करना है। और आप सबका भी, काविश टीवी का भी बहुत शुक्रिया जो आपने हमारे आज का प्रोग्राम कवर किया। आज हमारे साथ है डॉक्टर एजाज APPAC के जो फाउंडर हैं, और हम इनसे पूछेंगे आज ये क्या कहना चाहेंगे इस इवेंट के बारे में, एंड ये जो प्लेस है वंडरलैंड के क्या चाहिए। जी थैंक यू। हमने APPAC ने में जो तारक सुहेल है, ही इज़ द वन हु इज़ रनिंग इट, ही ओन्स इट, उन्होंने इनवाइट किया था, तो हमने ये कम्युनिटी को यहाँ इनवाइट किया है। वो इंट्रोड्यूस हिम टू द कम्युनिटी। It's a really nice place. Kids really had good time, and then we have a music program. Everybody is enjoying it. APPAC wants to bring the community together at different platforms, and so far, alhamdulillah, we have been successful. Today we have with us here Magda. ये बताएंगी आज ये क्या कहना चाहती है इस इवेंट के बारे में, इनसे पूछते हैं, and let's see what she has to say. It is wonderful to be here today on this Pakistani Revolution Day. A lot of the people gathered together. This is a great community I got to know today. Besides the tradition and the music and the awards that were given today, it is wonderful to be here today. आज हमारे साथ यहाँ पे हैं मौजूद आसिफ चौधरी, one of the founders of APPAC, और हम इनसे पूछेंगे इस इवेंट के बारे में। देखिए, पहली तो ये बड़ी खुशी हमें हुई है कि 23 मार्च डे ऑफ रेजोल्यूशन के हवाले से ये प्रोग्राम था, विच इज़ वेरी इंस्पायरिंग, कि जितने भी हमारे पाकिस्तानी कम्युनिटी यहाँ पर रहती है
اس کے لیے یہ جاننا بہت ضروری ہے کہ ریزولوشن ڈے کے دن کیا جو ہے وہ ڈیسائیڈ ہوا تھا. اور اسی حساب سے، اور یہ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ یہ پروگرام ایک بہت ہی ہسٹوریکل پوائنٹ کے اوپر جو ہے وہ ہو رہا ہے، جہاں پر مجھے یاد ہے کہ میں تقریباً کوئی 24-25 سال پہلے اپنی بڑی بیٹی چھوٹی سی تھی، اس کے ساتھ جو ہے وہ یہاں پر آئے تھے ہم. تو یہ دس از اے گریٹ نیوز فار امریکن پاکستانیز. لیکن ایک میسج جو ہے وہ جتنے بھی ہمارے امریکن پاکستانیز ہیں ان کے لیے یہ ہے کہ جس طرح ڈاکٹر اعجاز نے APPAC کی بنیاد رکھ کے کہ جو ہے وہ when God gives you a lot then at least you have to give some back to your community. تو یہ ہمارا میسج ہے. جتنے بھی امریکن پاکستانی ہیں ان کو چاہیے کہ اب جو ہے وہ یہاں پر رہتے ہوئے اپنی کمیونٹی کو اپ لفٹ کریں اپنے بچوں کے فیوچر کے لیے، تاکہ جو ہے وہ یہاں پر ہم جو ہے وہ اس کمیونٹی میں آؤٹ آف شیڈو نکل کر کام کر سکیں. Pakistan, Pakistan, Pakistan,